Assalamu alaikum and welcome to EOSCL Sports Roundup. Earlier this week, we heard a very sad news about one of the NBA player, Kobe Bryant, is dead in a helicopter crash in California. He has played in NBA for almost 20 years and scored 33,000 points overall. He was one of the asset to NBA player, and we will miss him in the current NBA sessions, and he was asset, as I said, mentioned, he was asset to NBA player. So Kobe Bryant was dead in a helicopter crash last week. In the next segment, what we are going to talk about EOSCL. So EOSCL season 5 is coming up. There are a lot of planning and preparation which has been happening at this point. I want to leave you with the video about EOSCL journey from 2016 till now. Watch the video, come back, and we'll talk about cricket in general, which has been happening over all the world. Watch the video. I'll see you on the other side. Welcome back. So you saw the video. Yes, it was a journey about EOSCL from 2016 till now, and it's counting as we go. It's been launching in a couple of weeks, so you will see season 5 posters and information about season 5 on our Facebook page, and we'll invite some of the team members from EOSCL in coming week, and we'll discuss more about season 5, what is coming up. So today we have Harun Sheikh Asad with us. Harun bhai, kaise hain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Kaise nahi bhai? Allah ka shukr, Allah ka. So Harun bhai, season 5 की हम बात कर रहे हैं. Season 5 आने वाला है, right? And lot of preparation आप थे हमारे साथ कुछ meetings में and all that. We had done a lot. So empires की क्या सूरत हाल है? मतलब what are you up for from umpiring perspective? Well, from umpiring perspective, अभी हम लोग जो है, we are looking for more umpires. We're looking to expand our teams because, of course, season 5 we have much more challenges, and one of the challenge is to expand our teams and get equality umpires. We already have quality umpires, but we're looking for more quality umpires. So if there is anyone who's watching, please feel free to contact Mr. Naeem Khiyani because we are looking for the umpires. We're looking to expand our teams, and we have a lot more in our plate when it comes to launching EOSCL season 5. Good. So, folks, season 5 launch ho raha hai. If you're interested to be part of EOSCL as an umpire, contact me at 416-570-9324, and we'll put you with Harun bhai, and Harun bhai will give you all the guidance what needs to be done. So, Harun bhai, Bangladesh, Pakistan aa gaya, khela, T20s ho gaye, right? Kaise dekha aapne? देखिए, first of all, it's a very good news. क्योंकि बांग्लादेश को जो है they were little reluctant in their decisions, which the logic behind it कुछ समझ में नहीं आई थी, but at the end of the day they made a right decision. They came. ठीक है, उनके कुछ key players नहीं आए, but लेकिन वो उनका personal matter है, क्योंकि मुशफिकुर रहीम ने भी कहा, उनकी personal statement आई, तो I'm not gonna comment on that, क्योंकि वो उनके personal matter है, board की तरफ से उनको permission थी. But overall, it's a good sign that the teams have started to come to Pakistan. श्रीलंका आई, उसके बाद बांग्लादेश आई. हाँ, थोड़ा सा उनके टूर की लॉजिक थोड़ी सी अजीब है. इट्स अ 3-legged टूर. पहले वो T20s के लिए आए, फिर उसके बाद वो एक टेस्ट के लिए आएंगे, फिर उसके बाद वो एक वनडे और एक टेस्ट के लिए आएंगे, which is a little awkward because it's spread over 4 months. लेकिन at the end of the day, I mean, देर आए दुरुस्त आए. It's a good thing. Yeah. At least cricket revive हुई, cricket जो है पाकिस्तान में आ रही है, श्रीलंका आया, now they are there. Exactly. Right? So at least we are
गेटिंग इनटू द राइट डायरेक्शन. सो मैचेस के अगर बारे में बात करें, हारिस रऊफ, हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी हारिस रऊफ के बारे में, उसकी एक्सपेक्टेशन जो बांग्लादेश के खिलाफ खेला, व्हाट डू यू थिंक, वाज ही एट द राइट एक्सपेक्टेशन व्हाट वी वर? देखिए, आई थिंक हिज एक्सपेक्टेशन वाज नॉट अप टू पार, जो कि मेरा ओपिनियन है, क्योंकि इट वाज अ डिफरेंट पिच. जो जितने भी मैंने इंटरव्यू सुने तो फर्स्ट T20 में तो पिच बहुत बेकार थी. रमीज राजन ने भी कहा, फिर इंजमाम उल हक ने भी कहा, फिर शोएब अख्तर ने भी कहा कि फर्स्ट T20 में पिच बिल्कुल बेकार थी. वाज अ डेड पिच और उस पिच में कुछ भी नहीं था. और तो इस वजह से आई डोंट थिंक ही वाज एबल टू परफॉर्म वेल, क्योंकि आप वो वो ऑस्ट्रेलिया में खेल कर आ रहा है. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, मेलबर्न रेनेगार्ड्स का वो प्लेयर थे. तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में जब वो खेल कर आ रहे थे तो इट्स अ बाउंसी ट्रैक, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ ट्रैक. वो उनकी पिचेस भी डिफरेंट है, मैं उस बारे में भी बात करना चाहूंगा. इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ पिच दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली. तो उनको यहाँ पर आकर एक डेड पिच मिली, जिस पर उनको जो है वो ही हैड टू ब्रिंग हिज स्किल्स इनटू, he has to factor in his skills. वो पिच ज़्यादा कोई हेल्प नहीं कर रही थी, तो he did not live up to the part. लेकिन yes of course, when we go to England, जो कि further summer में हमारा टूर है, और फिर जब हम वापस ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे जहाँ वो बिग बैश खेल के आएंगे, तो अब hopefully he will produce a little bit result. तो I think as a youngster we should give him more time at the international level. Which is good, क्योंकि अब वो मतलब based on now he is part of the international team, now he's part of Pakistan team, now he will learn as we go, right? बिल्कुल. So things will improve. Things will improve. He will learn. He will be mentored. He will be coached. So Babar Azam did very well, right? 66 runs almost बनाए, and the other thing as well, and he is living up to the mark based on the captaincy what he has been offered. Do you think that he should be more better? उनको और ज़्यादा अच्छा करना चाहिए as we go, or you are satisfied with the performance he has been delivering? देखिए, he's only 25 on papers. Definitely. He's only 25. I think there is still a lot more room to grow. I think इंसान की जो ग्रोथ है वो तब बंद हो जाती है जब वो सोच ले कि यार मैंने सब कुछ सीख लिया. तो I think there should always be a room for improvement, room for growth. तो based on that, I think there is still a lot to learn. हाँ ठीक है, वो अपनी कैटेगरी में जो है वो, अगर आप उनको किसी और 25 ईयर ओल्ड के प्लेयर से कंपेयर करें, या कोई भी ऐसा प्लेयर जो आज लेजेंड है, किसी वक्त लेजेंड था, उसको आप उससे आप बाबर आजम के स्टैट्स कंपेयर करें कि हाउ द पर्सन वाज व्हेन दैट पर्सन वाज 25 ईयर ओल्ड, तो बाबर आजम इज वे अहेड. ठीक है, तो ही डज हैव अ ब्राइट फ्यूचर. बट अगेन हमको जो है बाबर आजम को प्रॉपर, आई थिंक पीसीबी को बाबर आजम को प्रॉपर ग्रूम करना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, उसकी टेक केयर करनी चाहिए. क्योंकि जो बाहर जो ECB ले लें या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ले लें, वो अपने प्लेयर्स को ना सिर्फ ग्रूम करते हैं बल्कि उनका ख्याल और उनकी डाइट भी का भी बहुत ख्याल रखते हैं. बट ये सिर्फ बाबर आजम के लिए नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी फॉर एवरीबॉडी. इट हैज टू बी फॉर एवरीबॉडी, एग्जैक्टली. सिर्फ एक सेलेक्टिव प्लेयर के लिए आप ना रखें. बट आई थिंक बाबर आजम को जो है वो एक ब्रांड बनाना चाहिए. जो कि मैंने रमीज राजा का भी मैंने इंटरव्यू सुना कि दे शुड मेक बाबर आजम एज अ ब्रांड, कि यार अगर इफ यू आर ट्राइंग टू बी अ बैट्समैन, we don't have to look elsewhere. We already have enough talent that we can look up to the talent. कि यार if you want to be a proper sound technical batsman, you should play like Babar Azam. जैसे अभी एहसान अली, he did the debut in the first T20. Very good. He made 36 runs. Exactly. तो उन्होंने भी यही कहा कि यार it will be an honor to open the innings with Babar Azam. So I think he is already an icon. So I think PCB should use that image to their advantage. और इस तरह से they can revolutionize the entire team. Good. So, sir, Shoaib Malik and Mohammad Hafiz, we always needed them, right? हम कहते हैं कि they are old now, उनके पास अब वो टेक्निक नहीं रही and all that. We always say that, but when it comes to perform, they always perform, right? Shoaib Malik ने 58 रन स्कोर किए, मोहम्मद हफीज ने 67 किए, and now मोहम्मद हफीज का एक इंटरव्यू देख रहा था where he was saying that if you don't need me, just let me know. Right? So, what do you think about these two batsmen? देखिए, ये तो थोड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है. इफ यू डोंट नीड मी, लेट मी नो. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट ही सेड. कि उनको पता है कि यार यू नीड मी. तो गोइंग बैक टू माय प्रीवियस डिस्कशंस के, देखें आपका ये फ्लॉज आपका तब तक रहेगा जब तक आप प्रॉपर यंगस्टर ग्रूम नहीं करेंगे अंडर द बेल्ट ऑफ अ सीनियर प्लेयर. ये गैप हमारे पास इसलिए है क्योंकि हफीज और शोएब मलिक जब खेलते थे तो आपने बीच में कोई प्लेयर आपने नहीं रखा कि जो ग्रूम हो सके और आपकी बैकबोन बन सके. ठीक है, सही है. इंजमाम जब रिटायर हुए तो उसके बाद एक लैगिंग पीरियड था जिसमें हमें नहीं पता था मिडिल ऑर्डर में हमने किसको रखना है. बहुत सारे बंदे हमने ट्राई किए लेकिन कोई नहीं चला. ठीक है, आप फिर उसके बाद आप हफीज को लेकर आए वापस, ही स्टार्टेड प्लेइंग इन द मिडिल ऑर्डर. फिर आप शोएब मलिक को लेकर आए, ही स्टार्टेड प्लेइंग इन द मिडिल ऑर्डर. लेकिन फिर उसके बाद आप
अगेन वी आर बैक टू स्क्वायर वन. ये दोनों रिटायर हो रहे हैं, दो 40 साल के लोग T20 खेल रहे हैं एंड दे आर परफॉर्मिंग वे बेटर देन द यंग. एग्जैक्टली, एंड दैट्स वाज द पॉइंट. एग्जैक्टली, तो दैट इज द पॉइंट. तो अगेन पीसीबी को चाहिए और स्पेशली मिसबाह उल हक को चाहिए कि इंस्टेड ऑफ फॉलिंग बैक टू देम कि यार आओ हमें बचा लो सीरीज हारने से, बिकॉज वी है आफ्टर विनिंग 11 स्ट्रेट सीरीज वी हैड 11 स्ट्रेट लॉसेस. ट्रू. तो इंस्टेड ऑफ फॉलिंग बैक ऑन देम आई थिंक वी शुड यूज देम टू आवर एडवांटेज, कि आप उनके साथ थोड़े यंगस्टर्स को खिलाएं जिनको आपको लगा कि यार ये टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, ताकि वो आपकी मिडिल ऑफ द इनिंग्स को वो आपको संभालें. गुड. तो एक और बॉलर हैं उस्मान कादर, अब्दुल कादर के बेटे हैं जी, उनको क्यों चांस नहीं मिला? ही इज बीन डूइंग वेरी वेल. उनके जो डोमेस्टिक के जो उनके रिकॉर्ड्स हैं, ही इज बीन डूइंग प्रीटी गुड. देखिए आई थिंक अगेन मुझे इनका चक्कर थोड़ा सा लगता है फवाद आलम वाला. अच्छा, मुझे थोड़ा सा इनका चक्कर लगता है फवाद आलम वाला, बिकॉज वी आर पीसीबी इज लुकिंग टू ग्रूम यंगस्टर्स, लेकिन इस बेस पर वो शादाब खान को खिला लेते हैं या तो कोई और 21-22 साल का लड़का होता है वो उसको खिला लेते हैं. देयर नॉट लुकिंग फॉर समबडी हु इज इन देयर लेट 20s या इन मिड 30s. जैसे फवाद आलम को उन्होंने कंप्लीटली इग्नोर किया और उसके बाद अब वो इनको उस्मान कादर को वो प्रॉपर्ली इग्नोर कर रहे हैं. तो आई थिंक देयर इज अ टेक्निकल एरर, क्योंकि आई थिंक यंगस्टर जो ग्रूम होते हैं वो डोमेस्टिक लेवल पे ग्रूम होते हैं और उसके बाद आप उनको ए टीम की तरफ से खिलाएं. पाकिस्तान ए टीम की तरफ से आप उनको खिलाएं, वहां पर वो अगर परफॉर्म करे इंटरनेशनल जाकर, फिर आप उनको पाकिस्तान टीम में लेकर आए. ये तो कुछ नहीं, ये तो नहीं होता ना. देखें शादाब खान ने जो है वो PSL खेला, फिर उसके बाद कायद आज़म ट्रॉफी के लिए आ गए वो. अंडर 19 आई डोंट थिंक उन्होंने अंडर 19 भी खेला, नहीं खेला उन्होंने अंडर 19 भी नहीं खेला. तो आप एक प्रॉपर सिस्टम से लेकर आए उनको, जैसे ऑस्ट्रेलिया में होता है या इंग्लैंड में होता है कि आप, या इवन इंडिया में होता है कि आपने रणजी ट्रॉफी खेलना तो आपने ऊपर आना. तो इंडिया में इट्स अ बिग थिंग अगर आप रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, तो दैट मीन्स यू हैव somehow you have a slim chance of making to an Indian team. Sir, process though, there are a lot more Yes. room to grow into. So the we need to process. implement We more know process. that, right? PCB needs to implement more process. Ramesh Rajan ने ये बोला कि भाई आप if you don't invest in your domestic cricket, you're not going to go anywhere. Right, and there are a lot more room to grow as far as the process is concerned. Absolutely. क्योंकि process हमारा इतना ground level पे we don't have that जी. big of a deal. देखिए अगर A टीम आपकी कहीं जा रही है और वो खेल कर आ रही है, तो जो बंदा A टीम से पाकिस्तान टीम में आएगा उसको ऑलरेडी एक्सपोजर है डिफरेंट कंट्रीज का, डिफरेंट पिचेस का, डिफरेंट कंडीशंस का. अब जो बंदा सीधा उठकर जो है वो कायद आज़म ट्रॉफी से उठ के सीधा आ गया पाकिस्तान टीम में, तो उसको नहीं पता. वो तो क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड तो बहुत दूर की बात, तो शारजा में भी नहीं खेला, तो उसको कंडीशंस का ही नहीं पता. तो इसीलिए ये होता है कि ये एशियन कंडीशंस में अच्छा परफॉर्म करते हैं, और व्हेन दे गो टू ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, हाल हमारे सामने. PSL से कोई फर्क पड़ेगा? देखिए PSL से, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में PSL में फर्क पड़ सकता है, लेकिन जो आपकी प्लेइंग 11 है जो कि सेलेक्ट होकर T20 वर्ल्ड कप खेलने जाएगी, उनकी कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है. हाँ, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में आपको बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन दोज 11 प्लेयर्स, उनकी जो कोऑर्डिनेशन जो है ना वो बहुत बहुत मैटर करती है. तो आई होप इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस इंप्रूव हों और जो फ्यूचर में हमारे जो 2, 4, 5, 6 T20s हैं वो हमें हेल्प करें कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए. जी. अच्छा, गुड. तो अब हम बात करते हैं इंडिया. जी. India has been playing every day, right? Looks like that. I don't know what's happening there. लेकिन न्यूजीलैंड इंडिया के साथ खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ खेल रहा है, वेस्ट इंडीज इंडिया के साथ खेल के जा चुका है. इंडिया के पास टाइम नहीं है. They have been playing like almost every day now. तो T20 के लिए तो इंडिया से बेस्ट टीम तो अभी कोई नजर आती नहीं हमें. What do you think? देखें इस वक्त जो है ना वो इंडिया, I would actually want to use the word beast. इस वक्त जो है ना इंडिया बीस्ट बना हुआ है कि आप उसको ODI हो या टेस्ट हो या T20 हो, इट्स वेरी वेरी हार्ड टू बीट इंडिया, इवन फॉर टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया. कि हम एक ज़माने समझते थे कि यार हाँ ऑस्ट्रेलिया से जो है मुकाबला बहुत अच्छा होगा, तो इवन फॉर टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया कि जिस तरह से इंडिया ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया. तो आई थिंक अलॉट गोज इनटू द प्रोसीजर कि जिस तरह से वो टीम बना रहे हैं या जिस तरह से वो लड़के सेलेक्ट कर रहे हैं या जो लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं उनको कंसिस्टेंटली वो मौका दे रहे हैं. आई थिंक इट हैज़ टू डू विथ आप अपने लड़कों को कॉन्फिडेंस कैसे दे रहे हैं. क्योंकि हमारे जो है दूसरे कंट्रीज में अगर आप देखें, आप एक सीरीज में आपने लड़के को आजमाया, उसके बाद आपने उसको फारिग कर दिया कि यार सॉरी आप चले नहीं. That has happened many times. That has happened many times. उस वजह से काफ़ी करियर जो है वो ख़राब हुए. I don't think कि इंडिया जो है वो ऐसा कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंटली, एक लड़का था श्रेयास अय्यर, उन्होंने उसको वेस्ट इंडीज़ में भी जो है वो उसको मिडिल ऑर्डर में रखा, उसने परफॉर्म नहीं किया. ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने उसको मिडिल ऑर्डर में रखा, उसने परफॉर्म नहीं किया, उसने आखिरी मैच में परफॉर्म किया. अब न्यूजीलैंड में जो
मैचेस हो रहे हैं इंडिया के, उसमें उसने दोनों में विनिंग इनिंग्स खेली. तो इट जस्ट गोज टू शो कि आपने एक लड़के को मौका दिया कंसिस्टेंटली, ही हैड टू calm his nerves down, और उसके बाद जब वो पूरे अपने जोबन के साथ कलर्स उसने जब दिखाए अपने, तो उसने आपको मैच जितवाया और 203 का टारगेट चेस करवा दिया. So you trusted on that person. Exactly, you trusted on that person, and then he realized that my team is trusting me, they're constantly giving me opportunities, so I think it's about time that I deliver, and he did. So what do you say about KL Rahul, right? He's been performing very well. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, इंडिया के खिलाफ न्यूजीलैंड के खिलाफ काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक एक तो हमें पता है कि जो विराट कोहली की जो अपनी एक स्टैंडिंग है दैट ही इज मोर फिटर कैप्टन एंड ऑल दैट, एंड ही वांटेड हिज टीम टू बी फिट, राइट? सो इज दैट द रीजन वेयर द अदर टीम मेंबर्स आर परफॉर्मिंग वेल अंडर हिज कैप्टनसी? देखें, फिटनेस जो है वो, आई वुड से फिटनेस एक नशा है. अगर आप एक दफ़ा फिट हो गए तो फिर आप अनफिट होना आप जो है ना वो आपको फिर अच्छा नहीं लगता. कि यार पहले आपको लगता है कि यार मैं तो पहले 2 किलोमीटर या 5-6 किलोमीटर भाग सकता था, अब मैं भाग नहीं पा रहा हूँ, तो आपको अनफिट होना फिर आपको अच्छा नहीं लगता. आई थिंक इट हैज़ अ लॉट टू डू विद द फिटनेस, इट हैज़ अ लॉट टू डू विद देयर क्राउडेड स्केड्यूल फॉर द ईयर, और इट हैज़ अ लॉट टू डू विद देयर लीडरशिप. तो आई थिंक अगेन जब ये तीनों इंग्रेडिएंट्स आपके पास मौजूद हैं, यू आर बाउंड टू प्रोड्यूस अ टीम that is up for any challenge, और exactly वही BCCI ने किया. तो अभी पिचेस की हम बात कर रहे थे जी. It looks like कि इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता what type of pitch they are going to play. Absolutely. Right? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पिच बिल्कुल डिफरेंट थी जो हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम. इंडिया की अपनी पिचेस राइट वो डिफरेंट होती हैं, और जब इंडिया का टूर अब न्यूजीलैंड का है तो इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम एज वेल. सो इट लुक्स लाइक इंडिया doesn't care what type of pitch they are playing on. Exactly. So is this how other teams should follow? जैसे अभी आपने कहा था आप पिच की थोड़ी सी जो है वो बात करेंगे from Australia perspective. So what do you think? देखें, I would refer to actually बाबर आजम कि अगर if you are a technically sound batsman, you can survive in any condition. ठीक है, अगर आप या तो constant hitter हैं तो आप हर कंडीशन में आप नहीं चलेंगे. तो जिस तरह से बाबर आजम अपनी इनिंग पेश करते हैं कि आप उनको कोई सी भी पिच देते हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी सेंचुरी मार रहे हैं, वो शारजा में भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, इंग्लैंड में भी कर रहे हैं, कोई ग्राउंड नहीं छोड़ा उन्होंने. तो इफ़ यू आर टेक्निकली साउंड बैट्समैन यू विल डिलीवर. तो वही काम जो है वो इंडिया ने किया है कि इफ़ यू गेट योर बेसिक्स राइट, इफ़ यू आर टेक्निकली साउंड यू विल डिलीवर. पिचेस की जहाँ तक बात करें तो देखें, अभी रमीज राजा ने भी अपने इंटरव्यू में कहा, और मैंने आप बहुत ऑनलाइन भी इसको मैंने देखा, आजकल एक पिचेस आ गई उसको कहते हैं ड्रॉप इन पिच. ड्रॉप इन पिच. ठीक है, तो अब वो पिच उसका क्या करता है कि वो पिच जो है इट्स ऐसे है वो पिच के आपने ग्राउंड के बाहर है, आपने ये ले जाके ग्राउंड में रख दी. Oh, it's a custom pitch. एग्जैक्टली, इट्स अ कस्टम मेड पिच. आपने उसको बाहर, आपका ग्राउंड स्टाफ है, आपने उसको प्रॉपर बनाया. तो अभी मैं उसकी ट्विटर पे मैं उसकी प्रॉपर वीडियो भी देख रहा था, इरफान पठान ने वीडियो बनाई थी उसकी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच में जो पिच यूज होने वाली है वो उस वक्त ड्रॉप इन पिच है और उसको बाहर रखी हुई और उसको प्रिपेयर किया जा रहा है कि आप उसको किस तरह से बनाएंगे, उसको बाउंसी बनाना है, उस पर ग्रास लगानी है, उस पर क्या करना है. इट वे 30 पाउंड्स. ऐसा नहीं है कि वो 25-30 किलो की पिच है, इट वे 30 पाउंड्स. इट्स अ प्रॉपर पीस ऑफ लैंड कि आपने उसको पिच को जो है वो आपने ग्राउंड से बाहर उठाया और लाके आपने इंस्टॉल कर दिया. बात खत्म. जब मैच खत्म हो गया आपने निकाला, बाहर रख दिया पिच. तो इट्स अ ड्रॉप इन पिच. तो for the very first time they played on a drop in pitch. लेकिन again they're technically sound batsmen. Exactly. Right? Mentally very strong. उनकी fitness बहुत अच्छी है, तो it did not bother them at all. तो आई थिंक यही वजह है कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट खुद प्रॉस्पर कर रही है. वरना एक ज़माने में जो है वो उनके बॉलर्स को इतने खास नहीं थे और उनकी डेड पिचेस पर भी जो है वो मीडियम पेसर बॉलर बहुत खतरनाक होते थे क्योंकि कोई बॉल उछलती थी, कोई बॉल नहीं उछलती थी. एग्जैक्टली. तो ये जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ, राइट, तो इंडिया वन. न्यूजीलैंड वाज ऐसा लग रहा था कि दे डिडंट वांट टू प्ले, राइट. वो उन्होंने पूरी अपनी जो है वो जान छोड़ दी है. they technically lost mentally from that perspective. So India, definitely we have been talking about India for such a long time, but based on India and New Zealand, and when you said a drop in pitch, तो New Zealand ने भी drop in pitch पे खेला होगा. So what happened there? क्योंकि New Zealand की टीम भी sound है, they have done pretty well. 2 or 3 उन्होंने रन्स बनाए, उसके बाद इंडिया वो चेस कर गया. तो आप ऑलरेडी आप हर्ट हो गए कि यार मैंने इतना बड़ा स्कोर बनाया, वो भी इंडिया की टीम जो है वो चेस कर गई. तो अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, इफ यू आर टेक्निकली साउंड बैट्समैन, इफ यू आर मेंटली स्ट्रांग, इफ यू आर फिजिकली फिट, then yes, you're able to put up to or live up to any challenge.
तो आई थिंक वही काम जो है वो न्यूजीलैंड ने किया, इसलिए वो सेकंड मैच में वो ऑलरेडी हारे हुए थे, बिकॉज एक ऐसी टीम, एक सेम स्क्वाड जिसने 2 दिन पहले 203 रन बनाए, उसने उसी टीम ने उसी ग्राउंड में 2 दिन के बाद 135 रन बनाए, उससे शॉट भी नहीं लग रहा है। Exactly. तो आई थिंक थोड़ा सा मैं क्रेडिट दूंगा इंडियन बॉलर्स को भी, क्योंकि उन्होंने दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। Jadeja bowled very well. Exactly. Jadeja bowled 4 overs, 18 runs for 2 Very wickets. So he bowled really well. He bowled wicket to wicket. Ball उनका skid भी हुआ. Shami और बुमराह, they are turning out to be good bowlers. क्योंकि उन्होंने देखा कि यार जैसे जिस तरह से हमने बॉल कराई थी पहले मैच में T20 में, और रॉस टेलर ने उनको लेग पे उठा के जो है वो छक्के मारे थे, उन्होंने इस दफा वो बॉल कराए नहीं, उन्होंने बिल्कुल रूम ही नहीं दिया। कॉलिन मुनरो को मैंने जो फर्स्ट हाफ देखा, कॉलिन मुनरो को उन्होंने रूम ही नहीं दिया। कॉलिन मुनरो इज अ वेरी गुड प्लेयर फॉर ऑन दी ऑफ, उन्होंने सारी बॉल उसको पैड्स पे, रिप्स पर, लेग्स पर कराई कि वो बंदा हिल ही नहीं सका। एट द एंड ऑफ द डे ही गेव अप हिज विकेट कि यार मुझसे रन नहीं बन रहा तो मैं आउट हो जाऊं, कोई दूसरा बंदा आके खेले। तो आई अगेन going back to the same point, and I know I'm repeating myself, I'm stressing about it. जो इंडिया के bowlers हैं, now they are moving on to their aggressive nature. Yeah. Right? क्योंकि पहले हम देखते थे इंडिया के bowlers काफी defensive nature पे play करते थे, and that's how they work, right? Now they are getting into very aggressive. जैसे बुमराह की आपने बात की, right? So the amount of the way he was bowling at that time, right? Batsman technically वो डर रहा था उससे, right? To whether he should play or not. So I believe India is getting into the aggressive mode, which Pakistan used to do that all the time from bowling perspective. Exactly. देखिए जब आपके पास स्किल हो ना, वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह हुस्न देता है तो थोड़े बहुत नखरे आ ही जाते हैं। तो आई थिंक इट्स अबाउट द राइट टाइम, इट्स अबाउट द राइट टाइम, क्योंकि जब आपके सामने, जब आप किसी भी टाइप के बॉलर, जब आपके सामने बुमराह बॉलिंग कराने आएंगे, शामी बॉलिंग कराने आएंगे, या जडेजा बॉलिंग कराने आएंगे, तो यू ऑलरेडी हैव, दे हैव ऑलरेडी कॉन्कर्ड यू साइकोलॉजिकली। आपको पता है कि यार ये बॉलर डेंजर साबित हो सकता है, सो द बॉलर ऑलरेडी हैज साइकोलॉजिकल एडवांटेज। उसके बाद जब आप बॉल कराएंगे, जब आप उसको रूम ही नहीं देंगे, तो वो और जो है बैट्समैन बौखलाएगा, एंड दैट्स वेयर ही इज गोना मेक अ मिस्टेक, एंड दैट्स वेयर ही इज गोना गिव यू अ विकेट। तो I think if they can factor in a little bit of an aggression into it, कि जैसे जो वसीम अकरम या वकार यूज which is exactly they are doing, जो शोएब अख्तर करते थे कि थोड़ा सा घूरा, थोड़ा सा उसको जो है वो कंधा मारा और कुछ उसको थोड़ी बातें सुनाई, तो बंदा खुद ही प्रोवोक हो जाएगा। एक तो आप बॉलिंग अच्छी करा रहे हैं, आपने साइकोलॉजिकल आपको एडवांटेज है, उसके बाद आपने बंदा भी जो है वो कंफ्यूज कर दिया। तो आई थिंक ऑल इंग्रेडिएंट्स जो है वो आप एक बड़ा स्कोर नहीं कर सकते। Getting there as you go. So okay, so India versus Australia, हमने पहले ही बात करी थी इसके बारे में थोड़ा बहुत, right? So what do you think about Australia team now? क्योंकि Australia team unbeaten थी until they met India. So what do you think about that team? देखिए पहले मैच में तो बहुत झटका लगा इंडिया को, they lost by 10 wickets. लेकिन अच्छी टीमों की पहचान यही होती है कि वो अपनी गलती से सीखती हैं। They don't go to dressing room and then they come back disheartened. उन्होंने वो वापस घर गए, होटल गए या घर गए, जो भी है, और उसके बाद वो उन्होंने सीखा कि यार हमने कहाँ गलतियां की, क्यों हमने कौन से शॉट से जो हमने गलत खेले, कौन सी बॉल को हमने सही नहीं खेला, शॉट सिलेक्शन हमारी कैसी थी, जो बॉल पिच हमने की है वो कैसी थी, वो सही थी या नहीं की। और उसके बाद when they came back वेरी स्ट्रांग। लेकिन फर्स्ट ओडीआई में उन्होंने एक गलती भी ये की थी कि उन्होंने दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि केएल राहुल को कहाँ खिलाएं। दे सीम टू बी स्टिल कंफ्यूज अबाउट इट। वो उसको जगह जगह ट्राई कर रहे हैं, कभी ओपनिंग भेज रहे हैं, कभी उसको वन डाउन भेज रहे हैं, कभी उसको मिडिल ऑर्डर में भेज रहे हैं, बट ही इज परफॉर्मिंग एट एवरी लेवल। तो दे आर लिटिल कंफ्यूज कि आप उसको केएल राहुल को आप कहाँ शिफ्ट करें। तो उन्होंने फर्स्ट ओडीआई में आई थिंक उन्होंने ये गलती की कि केएल राहुल को उन्होंने वन डाउन भेजा, विच इज अ प्रॉपर पोजीशन फॉर विराट कोहली, और खुद विराट कोहली जो है वो चौथे नंबर पर आए। अब एक नंबर 1 बैट्समैन जब ऑलरेडी 30 ओवर्स 30वें ओवर में आ रहा है, तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है कि आप सेट हों और बड़ी शॉट्स रखना है। दैट्स व्हाई ही वाज नॉट एबल टू स्कोर रन्स। लेकिन उन्होंने खैर सुधारी ये गलती अपनी सेकंड इनिंग्स में, सेकंड मैच में, एंड देन ही केम वन डाउन, और उसके बाद उन्होंने जो है वो ही स्कोर्ड ओके, लेकिन उन्होंने केएल राहुल को एटलीस्ट 5वें नंबर पर ट्राई किया, एंड ही स्टिल टर्न्ड आउट टू बी अ गुड बैट्समैन, क्योंकि उन्होंने 80 ऑड रन स्कोर किए इन 50 बॉल्स। तो आई थिंक केएल राहुल हैज बीन अ गुड फाइंड। In my personal opinion, he should be a middle order batsman. He made 80 runs in 52 balls. Exactly. I think he should be a middle order batsman. अच्छा है and all that, right? So आपको पहले 3 नहीं छेड़ने चाहिए आपके, शिखर धवन, रोहित शर्मा और विराट कोहली, आपको पहले 3 आपको नहीं छेड़ने चाहिए, ठीक है? आप उनको चौथे नंबर पे खिला लें या 5वें नंबर पे खिला लें, but if you have a combination that's working, don't play with it. So Australia, Steve, 98, he scored 98 runs, right? लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ओवरऑल अगर देखा जाए तो दे आर स्टिल नंबर 1 फ्रॉम
from scoring perspective and from stats perspective, right? So what do you think Australia's next journey, right? जो उनका next journey होगा, right? So do you think that based on India, जो India के साथ उनके matches हुए हैं, and now they are moving on to the next one, right? So T20 में जो World Cup में, would Australia be ready by that time? क्योंकि वो अभी तक तो वो unbeaten ही चल रही थी before they met India, right? They will be ready. They do have an advantage कि वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे हो रहा है T20. उनकी सारी टीम अभी बिग बैच भी खेल रही है. अगर वो उधर नहीं खेलते तो वो बिग बैच खेल रहे होते तो उनकी सारी टीम बिग बैच भी खेल रही. सो दे नो देयर कंडीशंस, दे नो देयर पिचेस. और जैसा कि मैंने पहले भी पिछले शोज में कहा कि वो अपने मुल्क में शेर है. हाँ, एग्जैक्टली. ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने मुल्क में शेर है. उनको अपने मुल्क में हराना बहुत मुश्किल काम है. बहुत मुश्किल काम है. आप उनको अपने मुल्क में वो हारते नहीं है, उनको हराना पड़ता है. Exactly. Like you cannot, you have to get them into a position where they make a mistake. वो खुद से मिस्टेक करके आउट नहीं होंगे. और ग्राउंड्स भी डिफरेंट है वहाँ. उनके ग्राउंड भी डिफरेंट है, ग्राउंड डायमेंशंस डिफरेंट हैं, और उनकी बैटिंग टेक्निक्स उनकी बहुत डिफरेंट है अपने घर में, और उनको अपनी कंडीशंस का पता. राइट. सो लुकिंग फॉरवर्ड, पाकिस्तान का नया जो है वो कोई और कंट्री पाकिस्तान विजिट करे, विल सी. Hopefully, I'm really hoping कि I think जो बड़ी क्रिकेटिंग नेशंस हैं उनमें से कोई एक कंट्री आए. I'm really hoping actually कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान आए. लेकिन बांग्लादेश वापस आएगा मेरे ख्याल से टेस्ट मैच खेलने. उनका टेस्ट सीरीज है फरवरी ऑनवर्ड्स, राइट? फरवरी में उनकी एक टेस्ट सीरीज है और एंड ऑफ मार्च बिगिनिंग ऑफ अप्रैल एक और टेस्ट है. तो हम उसके बारे में मजीद बात करेंगे when we'll go there. Inshallah. So thank you so very much, Harun bhai, for being part of the show. So this was it, folks. We talked about cricket overall in general. So cricket in Pakistan, India, Australia, and Bangladesh as well. So we have talked in general about cricket, what has been happening so far. So as I mentioned earlier, season 5 is about to launch in a couple of weeks. We already showed you a journey about 2006 about EOSCL video from 2016 onwards, and we'll inshallah launch EOSCL season 5, and we'll have some of the team members from EOSCL, and they'll talk about what EOSCL is going to offer in this year. So this is Naeem Khiyani signing off. Thank you so very much for watching. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो आपको एक बेहतरीन लॉयर की ज़रूरत होती है और हमारे साथ मौजूद हैं चैंपियन डेविड हिमोफार्ब. Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Brzezinski LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है हमें कॉल करें 416-570-0157. हमारा मानना है कि खानों से सिर्फ सेहत ही नहीं रिश्ते भी बनते हैं. महसूस कीजिए देसी खानों की ताज़ा महक. विलेज टेस्ट, द ट्रू ट्रेडिशनल पाकिस्तानी cuisine, जहां ना सिर्फ पाकिस्तानी रिवायती कढ़ाई और वीकेंड ब्रेकफास्ट एंड डिनर बफे होता है बल्कि विलेज का माहौल भी है.
तजुर्बेकार पाकिस्तानी शेफ की बनाई हुई स्पेशल कढ़ाई और बारबेक्यू। एक बार पाकिस्तान के रिवायती खानों का मजा लेने जरूर आइए। पार्टीज और केटरिंग के स्पेशल पैकेजेस के लिए राब्ता करें 905-232-3663। Village Taste, 4141 Dixie Road, Mississauga. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. ब्रैंडफर्ड डाउनटाउन में इन्वेस्टमेंट का एक शानदार मौका। लॉरियल यूनिवर्सिटी कैंपस सेंट्रल लाइब्रेरी से चंद कदम के फासले पर। कॉन्डो प्राइसिंग स्टार्टिंग फ्रॉम $300,000, बुकिंग विद ओनली $5,000, इजी एक्सटेंडेड डिपॉजिट स्ट्रक्चर, मिनट्स टू हाईवे, फ्रंट ऑफ द वाटर पार्क, 2 साल की रेंटल गारंटी, 1 साल की फ्री मेंटेनेंस और साथ में फ्री असाइनमेंट क्लॉज। Buy a condo and enter to win a brand new car. To book a unit, call Adnan Shamsi at 416-788-7009 or visit grandbellcondos.ca. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law.